Hi everyone, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है. I am a graduate of BITS Pilani and I have more than 6 years of work experience in the education industry. And today I am launching my own course on quantitative aptitude for the exam SSC CGL. I am really excited and I am sure all of you guys are excited as well. So let's get started. तो हमारा पहला टॉपिक है numbers. Now, everything that you see around you, for example 2, 3, 4 by 7, 6.5, root 2. ये सब क्या है? All of these are numbers, right? So we'll be studying this in much more detail today. Now, numbers can be categorized into two types. So हमारे पास होते हैं real numbers and complex numbers. अब complex numbers क्या होते हैं? If a number can be written in this form, a plus iota b, right? अगर आप किसी नंबर को a plus iota b की फॉर्म में लिख सकते हो, where iota is what? Iota is square root of -1, then this is a complex number, right? For example, 2 plus 3 iota is a complex number, right? But this is not the topic of our discussion. इस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते. हम जो कवर करने वाले हैं वो होगा रियल नंबर्स, राइट? सो जो भी नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं है वो रियल नंबर है, राइट? सो वी हैव रियल नंबर्स एंड वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब थोड़ा रियल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं. नाउ रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वी हैव रैशनल नंबर्स एंड वी हैव इरैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या है और इरैशनल नंबर्स क्या है, चलिए वो देखते हैं. अगर किसी नंबर को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पे q is not 0, फॉर एग्जाम्पल 3 by 5, राइट? इफ यू सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, देन दिस इज अ रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1 by 2, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 0. इवन इफ आई टॉक अबाउट 3 को भी आप लिख सकते हो 3 by 1, right? So it is in the form of p by q, where if you see the denominator is not 0, so 3 is also a rational number, right? So what is the basic definition of rational number? It's a number which can be written in the form of p by q, where q is not 0. अब अगर आप rational number को एक decimal form में convert करोगे तो आपको दो properties मिलेंगी. या तो वो terminating होगा, which means वो खत्म होगा. For example, it's 3.5 is a terminating decimal क्योंकि उसका जो डेसिमल पार्ट है वो फिक्स्ड है, वो 5 पे खत्म हो रहा है. नाउ व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? इफ वी सी 3.5555 इट गोज ऑन अप टिल इंफिनिटी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट? सो ये है टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? सो अगर आप रैशनल नंबर को एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल 3.555 में अगर आप देखो 5 रिपीट हो रहा है. इन द सेम वे इफ आई से 4.656565, तो यहाँ पे 6565 रिपीट हो रहा है एंड ये इनफाइनाइटली रिपीट होगा, राइट? तो अगर आप रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. अगर किसी नंबर को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते p by q फॉर्म में, देन इट इज इरैशनल नंबर. सो ऑल द रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल होंगे. नाउ अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सो दिस विल बी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल 3.456 1 2 3 1 3 5 4 5 2 3. अगर आप इसका डेसिमल पार्ट देखो तो उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इरैशनल नंबर. सो हमने क्या देखा? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. ओके, अब जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं. वी हैव फ्रैक्शंस एंड वी हैव इंटीजर्स. फॉर एग्जांपल 2 by 3 इज अ फ्रैक्शन, 3 by 5 इज अ फ्रैक्शन, बट -5 इज एन इंटीजर, राइट? 0 इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर, राइट? सो वी हैव फ्रैक्शंस एंड वी हैव इंटीजर्स, राइट? अब फ्रैक्शंस भी दो टाइप्स के हैं. वी हैव प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ व्हाट आर दीस? अगर किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, फॉर एग्जांपल 3 by 5, then this is a proper fraction. We have 1 by 7. This is a proper fraction. The numerator 1 is less than the denominator 7. लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा है, फॉर एग्जांपल 7 by 2, ये है improper fraction. और 10 by 3 ये है improper fraction, right? तो अगर न्यूमरेटर छोटा है it's a proper fraction. अगर न्यूमरेटर बड़ा है it's an improper fraction. Now what are integers? So if we start from minus infinity, हम आ जाएंगे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. So these are all the negative numbers, right? And they go on up till negative infinity. इसके बाद आता है 0, 1,
2, 3, 4 up till पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये होते हैं इंटीजर्स, जिसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स यहाँ तक, और होल नंबर्स जो शुरू होते हैं 0 से, राइट। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नेगेटिव नंबर्स, और 0 ऑनवर्ड्स सारे पॉजिटिव नंबर्स, ऑल ऑफ दिस कलेक्टिवली मेक द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। सो नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या है? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0, 1, 2, 3, 4 अप टिल इंफिनिटी, दैट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में अगर आप 0 को हटा दो, हमारे पास बचता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। सो नेचुरल नंबर्स क्या है? नंबर स्टार्टिंग एट 1, सो 1, 2, 3 अप टिल इंफिनिटी, दीज आर नेचुरल नंबर्स, राइट। So integers is negative numbers plus whole numbers. Whole numbers is 0 plus natural numbers. Natural numbers क्या है? 1, 2, 3 up till infinity. Alright. अब natural numbers में आप देख सकते हो we have composite numbers and we have prime numbers. Now what are these? So let's take a number, let's say 5. So 5 के factors क्या है? 5 के factors होंगे 1 और 5, right? तो इसके कितने हैं? 2 factors. एक तो 1, the number 1 and the number itself, which is 5. In the same way 13 के factors क्या है? It's the number 1 and the number 13, so it has 2 factors. So अगर किसी भी number के सिर्फ 2 factors हों, the number 1 and the number itself, तो वो होगा prime number. So our prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13 and we have many more, right? And अगर कोई number prime नहीं है, then it's a composite number. For example, let's take 6. 6 के factors क्या है? 1, 2, 3 and 6. So it has 4 factors, right? So this is not a prime number, it's a composite number. So prime numbers, composite numbers, and if we talk about the number 1, it is neither prime nor composite. Alright, what are co-prime numbers? अगर कोई दो numbers हैं जिनका एक ही common factor है और वो है number 1, then these are called co-prime numbers. So what are the factors of 8? 8 के factors होंगे 1, 2, 4 and 8. 15 के factors होंगे 1, 3, 5 and 15. So common factor क्या है? Common factor है 1, right? So इन दो numbers का common factor है 1, that is the number 1. So these are co-prime numbers, right? Alright, so let's talk about triangular numbers. A number that can be represented by a pattern of dots arranged in an equilateral triangle with the same number of dots on each side. इसका मतलब क्या है? अगर आप dots को equilateral triangle में ऐसे arrange करो कि हर side में equal dots हो, वो जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स होंगे दैट विल बी अ ट्रायंगुलर नंबर. फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितनी डॉट्स हैं और कितने स्टार्स हैं? 1, राइट. सो 1 इज अ ट्रायंगुलर नंबर. अब ये भी देखो, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर साइड में कितने स्टार्स हैं? 2, 2 and 2, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर नंबर 3. नाउ इफ यू सी दिस, ये क्या है? ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर साइड पे कितने स्टार्स हैं? 3, 3 and 3, राइट. टोटल नंबर ऑफ stars is 6, so this is also a triangular number. So what are triangular numbers? We have 1, 3, 6 and 10, right? So we start with 1. इसमें जब 2 ऐड करोगे हमारे पास आता है 3. इसमें जब 3 ऐड करोगे हमारे पास आता है 6. इसमें जब 4 ऐड करोगे तो हमारे पास आता है 10. इन द सेम वे जब 5 ऐड करोगे हमारे पास आएगा 15. जब 6 ऐड करोगे हमारे पास आएगा 21, right? So this is how you get triangular numbers. What is a Pythagorean triplet? If you take 3 numbers in such a way that a square plus b square is equal to c squared, then this is called a Pythagorean triplet. For example, 5 squared is equal to 4 squared plus 3 squared, right? So this is a Pythagorean triplet with 3, 4 and 5. Alright, what are even and odd numbers? All the numbers which are multiples of 2, 2, 4, 6, 8, they are even numbers. All the numbers which are not multiples of 2, that is 1, 3, 5, 7, these are odd numbers, right? So even and odd numbers. Now if I tell you there's a number जिसका tens digit है 3 and units digit है 5, so what is the value of this number? The value will be 3 into 10 plus 5, that is 35. In the same way, if I tell you the tens digit is x and the units digit is y, so the number will be 10x plus y. If I say the hundreds digit is x, tens digit is y, units digit is z, so the number will be 100x plus 10y plus z. So this is how you get a number from its digits. So next topic is place value and face value. So place value is the digit multiplied wherever it is placed, either by hundreds or thousands. For example, अगर आप इस number को देखो 2, 3, 5, 6, right? What is the place value of 5? 5 is at the tens place, right? So उसकी place value होगी 5 into 10, that is 50. What is the place value of 2? It is at the thousands place, so place value होगी 2 into 1000,
that is 2000. Simple. If I talk about 5, it is at the 10th place. इसकी place value होगी 5 into 1 by 10. My bad, this is 1 by 10. So this is 1 by 10. So this is 0.5, right? And what is the face value? Face value is the digit itself. So if I say what is the face value of 3, it is 3 itself. It's 3. What is the face value of 5? It is 5, right? So this was all about the first topic. This is very simple. Thank you for attending the lecture. Make sure you follow all the upcoming videos because we are going to cover the theory of all the topics. And once we're done with the theory, we will be solving lots and lots of questions. Thank you for watching. Take care. Bye bye.